Hello, my dear Python programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution welcome you all for this session. इस सेशन में स्पेसिफिकली फंक्शन को यूज करके एक प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेंगे. प्रोग्राम इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज एरिया ऑफ सर्कल का कैलकुलेशन करना है, बट not with the plain method, with the help of what? Functions. So let's see what is the problem statement demonstrating the working of what? Functions. Write a function to calculate area of a circle. सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है. वी नो दैट इट इज गोइंग टू वर्क एज पाई स्क्वायर, राइट. सो यहाँ पे जो रेडियस वैल्यू है यो यूजर से एक्सेप्ट करना है एंड उस रेडियस को पास करना है एज एन आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन. So whatever the function that we'll be writing, that function should go on accepting as a parameter what? The value of radius. And then function से calculated area क्या होना चाहिए? Return होना चाहिए, right? So in all, we are going to write a function in such a way that it should go on accepting certain parameters and then it should go on returning some values. So बहुत ही interesting and basic aspects को touch करने वाले हैं. That is how function will work, right? Okay, and यहाँ पे algorithmic steps are very clean and clear. The first step is accept radius from user, right? Second step will be call calculate area function and then display area. Khatam. Right? Okay. So calculate area will be the user defined function जो कि हम लोग लिखने जा रहे हैं. So let us see like how we can go on working across this. What are the internal implementation details? ये सब समझा देने वाला हो with the help of PyCharm and Python code. So let's move into the PyCharm to write this code. So we are back into the PyCharm and let's see like how we can go ahead with the discuss code, right? So यहाँ पे I'll go with the name as demo 28 and यहाँ पे documentation के लिए let's go on writing like program for area calculation of circle using functions, right? So यहाँ पे we discussed during the theoretical aspects of function that function should be defined prior to its call. तभी जाके इंटरप्रेटर को ये पता चल पाएगा कि फंक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट है, राइट. सो फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कैलकुलेट एरिया, राइट. Okay, and function is going to accept one value. Let us say that value is radius. And यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया कि इस फंक्शन का कोड कैसे लिखना है. सो इन दैट केस विल बी यूजिंग द पास्ट स्टेटमेंट, राइट. ओके, अभी मेन कोड के बारे में सोचते हैं. सो मेन कोड में एक वेरिएबल होगा रेडियस जिसको यूजर से एक्सेप्ट करना है, राइट. सो यहाँ पे विल गो विथ रेडियस इज इक्वल टू इंटीजर को टाइपकास्ट करेंगे एंड हाउ टू गो ऑन एक्सेप्टिंग इट. यस, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? इनपुट फंक्शन. एंड यहीं पे यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर radius of circle, right? Okay, the radius value we got it into this and फिर जाके हम लोगों को एक वेरिएबल लेना है एरिया करके एंड यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे कैलकुलेट एरिया फंक्शन को एंड जहां पे हम लोगों को रेडियस का वैल्यू पास करना है, राइट. ओके, सो इन दिस केस विल बी पासिंग व्हाट? रेडियस वैल्यू. जैसे ही एरिया कैलकुलेट होगा तो कैलकुलेटेड एरिया विल कम इन द वेरिएबल एरिया एंड फिर यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करना है एरिया ऑफ सर्कल इज एंड कॉमा करके एरिया को डिस्प्ले करना है, राइट. ओके, जब हम लोग फंक्शंस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो नीड ऑफ द फंक्शन में देखा इट इज गोइंग टू मेंटेन द मॉड्युलैरिटी इन द कोड, राइट. एंड कोड इज मोर एंड मोर रीडेबल. अगर आप अल्गोरिथमिक स्टेप्स के हिसाब से यहाँ पे देख रहे हो मेन एंटिटी में क्या है? मेन एंटिटी एक्सेप्ट द रेडियस, कॉल द कैलकुलेट एरिया एंड डिस्प्ले द एरिया, राइट. तीन अल्गोरिथमिक स्टेप्स,
3 अल्गोरिथमिक स्टेप विथ इंडिविजुअल लाइंस, राइट। तो यहाँ पे ये जो एरिया कैलकुलेशन का पार्ट है, दैट विल बी डेलीगेटेड, दैट विल बी गिवन टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, जो कि हम लोगों को रेडियस एक्सेप्ट करके एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा, एंड दिस एरिया विल कम इन दिस एरिया वेरिएबल, एंड हम लोग उसको वापस डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। ओके, दिस इज हाउ ब्यूटीफुली द फंक्शन कैन वर्क फॉर मॉड्युलैरिटी, राइट। सो लेट्स गो ऑन राइटिंग द फंक्शन। फंक्शन लिखना अभी कैसे है इसके बारे में सोचते हैं, राइट। सो फंक्शन का बॉडी में व्हाट डू आई नीड, यहाँ पे नाउ व्हाइल राइटिंग द बॉडी ऑफ द फंक्शन विल रिमूव दिस पास स्टेटमेंट, एंड यहाँ पे we will go on declaring one variable, let us say pi value is equal to, and यहाँ पे करेंगे 3.14, right? Okay, now area calculation के लिए I'll go with area as a variable name, and यहाँ पे करेंगे pi value multiplied by पास किया हुआ रेडियस multiplied by radius, right? Okay, and यहाँ से रिटर्न करेंगे एरिया का वैल्यू, राइट, एंड दैट एरिया वैल्यू विल कम इन दिस एरिया and will go on displaying. I do agree. यहाँ पे you may find some kind of confusion कि रेडियस दो जगह पे डिक्लेयर हो चुका है, एरिया दो जगह पे डिक्लेयर हो चुका है. Let me show you working of this code, and then I'll be discussing very important topic known as variable aliasing. उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ, right? So please observe how this works, right? For example, if I go on entering the radius of a circle as 10, so 10 का स्क्वायर बनेगा 100, 3.14 into 100, 314 आना चाहिए अपना एरिया, and it goes on saying like area of the circle is what, 314.0. So my function is working in a very perfect way. Let us go on checking it for one another value, and let's go with 12 as a radius of circle, and यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं area of circle is so and so, right? Okay, now the thing is like यहाँ पे जब हम लोग वेरिएबल अलाइजिंग का बात करते हैं, मतलब सेम वेरिएबल नेम एट मल्टीपल प्लेसेस, राइट। ये जो रेडियस है, ये जो एरिया है, दोज आर होल्डिंग विच स्कोप, दोज आर होल्डिंग विच स्कोप, ग्लोबल स्कोप, राइट। ओके, एंड यहाँ पे ये ग्लोबल स्कोप वाला रेडियस पास होके इस लोकल रेडियस में कॉपी हो चुका है, राइट। ओके, सो व्हाट आर द लोकल वेरिएबल दैट आर देयर इनसाइड द कैलकुलेट एरिया, एंड यहाँ पे pi value is a local, area is a local, as well as this radius is a local, and we know that local variables are having the scope into the function in which they are declared and defined. तो ये radius, ये pi value, ये area सीमित है किसके लिए, ये calculate area functions के लिए, right? Okay, and instead of using different variable names, my suggestion according to coding conventions for software development, we should go on using same variable names, right? Confusion होने की कोई बात नहीं, because there is a separate scopes available into this, and the concept is known as variable aliasing, right? So code is very simple. जहां पे हम लोगों ने देखा कि एक वेरिएबल को पास करेंगे as a parameters, and यहाँ पे this radius is actual argument and this radius is a formal parameter. Then ये एरिया कैलकुलेट यहाँ पे हो रहा है, and this area रिटर्न होके it comes into this area as a value, and इस एरिया को हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं as a final answer, right? Okay, so that's it from my side about this code. सिंपल है, जरूर करके देखना है आपके मशीन के ऊपर, and try to use variable aliasing का concept, मतलब same variable name across multiple functionalities, right? Okay, and this is going to work in a very beautiful way, right? So that's it from my side. Keep doing programming. Thanks for the watching. Happy learning, and thank you very much.